ओके, मरियम, अशरफ, जो भी क्लास में है, कैन यू ऑल हियर मी क्लियरली? Yes, miss. अच्छा, अब चैट के मैसेजेस मैं नहीं देख पा रही, तो जिसको जो मुझसे बात करनी है वो अपने आप को अनम्यूट करके कर ले. एंड आई एम स्टार्टिंग दिस चैप्टर, एंड एज आई टोल्ड यू दैट आई एम गोइंग टू डू द स्टैट्स पार्ट विथ यू. ठीक है? So the name of this chapter is biodiversity, right? मरियम, अशरफ, आप मुझे बताओ बायोडाइवर्सिटी से क्या दिमाग में आता है? एनीथिंग हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी, इसका क्या मतलब? मरियम, अशरफ, मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है लेकिन 2 मिनट दे, मैं सोच कर बता रही हूँ. अच्छा चलो, इतनी देर में कोई और बता लेगा उसके दिमाग में आ रहा है, ताकि हमारा टाइम सेव हो जाए. मरियम, शिराजी, आप बताओ बायोडाइवर्सिटी से सबसे पहले क्या दिमाग में आता है when you hear this word? Classification of living क्लासिफिकेशन things. आती है, ऑफ लिविंग थिंग्स आती है. और जो लोग भी एम कैट दे रहे हैं, ऑल दो स्टूडेंट्स हु आर गिविंग एम कैट या एमडी कैट, जो भी, they know that they have to go through the classification of living organisms in detail, which is not done in so much detail in A levels, but in inter syllabus FSC syllabus it is done. ठीक है? Right now I will not be going into the classification, but I will be starting with some of the techniques that are done in order to find out the extent of biodiversity in an area, in a country or in a city or wherever. This world is full of different kinds of ecosystems and habitats. And with ecosystems and habitats, it's full of different kinds of colorful living organisms, starting from a small bacterium to an insect, to a caterpillar, to a butterfly, and to big animals and the biggest animals, and then of course the human beings, right? And all of us, none of us can say that we can live independently on this earth without having the need to interact with each other, right? We do interact with each other. Every living organism is interacting with another living organism, और इसी interaction की science को ही हम कहते हैं ecology. And if you remember, in O levels, you were taught about ecology, you were taught about the food chains, the trophic levels, primary consumers, secondary consumers, ये सब आपको बताया गया था. अच्छा, I won't be touching the ecology part, but I will be doing certain aspects of measurement techniques, क्योंकि जब मैं आपको ये stats part करवा रही हूँ, calculation वाला part, तो हम थोड़ा सा theory वाला part skip करके direct आ रहे हैं measurement वाले part पे. So we say that if we want to find out the extent of biodiversity of an area, अगर हमें ये मालूम करना है कि कोई area कितना biodiverse है, मतलब उसमें कितनी variety है living organisms की, so we should have a way of calculating it mathematically so that we can assess कि ये जो particular area है ये कितना diverse होगा from the biological point of view. ठीक है? तो from the biological point of view, we can say biodiversity can be studied at various levels. It can be studied at the level of ecosystems, studied at the level of different species, and studied at the level of different kinds of genes. ठीक है? So, for example, if I want to talk about, मुझे ये बता, अगर अंदाजा लगाना है कि is Karachi more biodiverse or is the Amazon rainforest more biodiverse? अच्छा, अभी इससे पहले कि मैं ये मालूम करूं कि इन दोनों में से कौन ज्यादा हाई बायोडाइवर्सिटी एरिया है, आप अपनी नॉलेज से बताओ. मरियम, आप ही बता दो, मरियम शिराजी, कि पहला ही ख्याल क्या दिमाग में आता है if I ask you to tell me कि इन दोनों में से कौन सा ज्यादा बायोडाइवर्सिटी किसी के पास है, तो what will be your answer? Amazon. अच्छा, जब Amazon आप बोलोगे तो what is that thing that made you think about Amazon being more biodiverse? वो क्या फैक्टर है? दिमाग में क्या पहला थॉट आ रहा था? Miss, it's a forest, right? So trees की भी different species होंगी और animals, habitats, उस सब के बारे में सोच. Okay, fine. So this means that it's a forest.
and Karachi is a more urbanized city, right? So as a general rule, even if I don't do it mathematically, I can generally say that Amazon rainforest is more biodiverse. So the reason Amazon rainforest, or the reason any place is more biodiverse, depends upon the diversity of the ecosystems or the habitats, कि कितने तरह के habitats वहाँ पे हैं, right? The diversity of these species, how many, as Mariam said, how many different kinds and varieties of species can I find within a particular area, and what is the different kinds of genes, genetic biodiversity हम कहते हैं कि for example कि अगर एक snail की species है, snail, right? So in, let's say if I find out in the Amazon rainforest some snails, right? So I can actually study कि do I have only one genetic variety of snails, or do I have many genetic variety of snails? यानी कि सारे snails brown color के ही हैं. There are some which are red in color, there are some which are yellow in color, there are some which are yellow and brown in color. So this will be actually even more biodiverse. Like हम, we move from a big thing to a small thing. Big thing means कि अगर मुझे मालूम करना है कि an area is more biodiverse, I will say are the different kinds of habitats found in this area. इस पूरे रेन फॉरेस्ट के अंदर कितने टाइप के हैबिटेट्स हैं, इसी रेन फॉरेस्ट के अंदर क्या सिर्फ एक ही इकोसिस्टम है या बहुत सारे इकोसिस्टम्स हैं? Is there a river over there? Is it only a forest, right? Is there a grassland over there? Whatever. How many different kinds of species do I find in that particular place? और फिर स्पीशीज के अंदर और अंदर हम जाएंगे तो हम कहेंगे कि अच्छा उसी एक स्पीशी के अंदर जो है वो क्या सारे जो है वो लायंस एक ही कलर के हैं या सारे स्नेल्स एक ही कलर के हैं. So this is going to give you another aspect of biodiversity, which is genetic biodiversity. ठीक है? तो but these are, जी बेटा. इसमें मुझे बस क्वेश्चन करना था कि मिस इन हैबिटेट्स व्हेन लाइक मल्टीपल हैबिटेट्स हैं, should we consider के एक canopy different habitat, the base of a tree different habitat because different things live there? Should we consider that different? अच्छा, should we consider it as a different habitat? ये पूछ रहे हो? Yeah, like the top of a tree and the bottom of a tree, because like different things live at the different parts of a tree too. As it, or it is one tree. Tree is the habitat. How does that work? हाँ, बिल्कुल सही कहा. अगर हम उसकी definition पे जाएंगे, by definition, so we say that habitat is a place where certain animals or living species they live, right? Habitat का मतलब ये है कि ये है ना habitat, कि a place where an organism or a population or a community live, right? So it can be anything. I can say the top of the tree is the habitat for certain species of birds, and the bottom of the tree or the roots of the tree are the habitat for the nitrogen fixing bacteria. तो आपकी बात बिल्कुल सही है कि as per the definition you can even break down a habitat into smaller habitats, but as a general rule हम ये कहेंगे, हम बड़े scale पे भी कह सकते हैं और छोटे scale पे भी कह सकते हैं, because the definition is a place where an organism, यानी एक अकेला organism or a population or a community lives. तो आपकी बात बिल्कुल सही है राफे. Good. You're exactly, आपने उसी चीज को pinpoint किया जो कि आपके दिमाग में था. And the same way this syllabus is also breaking down a habitat into a place where an organism lives or a population or a community. अब ये organism क्या है, population क्या है, community क्या है, ये हम बाद में करेंगे. अभी I'm just trying to skip these things and come to the calculation part. ठीक है? अच्छा, अब I am in the field, ठीक है, और मैं एक ecologist हूँ, and I have been given this task to assess the species diversity, right? For example, I have been told to go into the Amazon rainforest, या to a crop field, a rice paddy field, या कोई सी भी field मुझे गांव में भेजा गया है और मुझे कहा गया है कि go and visit that area and assess the species diversity. Find out करो कि यहाँ पे कौन सी तरह की species रहती हैं, right? And I'm going with my team. So what do I do? अब ये मोटी चीजें, right? Of course, अगर मुझे कोई task देता है, तो the first step will be I will collect the organisms and make a species list, right? For example, अभी मुझे एक butterfly नजर आ रही है, and then I can see an earthworm. I can see some daisies. Northern areas में चली गई, मरी नथिया गली में. I can see some daisies, right? Then I can see ladybirds.
whatever, and I start, also collecting the organisms, and at the same time मेरा कोई assistant है जो उसकी list भी बना रहा है, right? And then maybe that I come across a plant or an animal whose name I don't know, right, at all. So guys, do you all know, आपने कभी ये चीज यूज की है अपने मोबाइल फोन में, गूगल लेंस? किसने यूज किया है गूगल लेंस? हाँ मिस, बेसिकली टेक अ पिक्चर और वो आपको कॉमन पिक्चर्स और इंफॉर्मेशन देता है उस पेपर को। कभी ट्राई किया है किसी ने? बहुत मजे का है वैसे गूगल लेंस, बहुत अच्छा है। बिकॉज आई रिमेम्बर दैट आई वेंट टू अ डेजर्ट इन पाकिस्तान, बलूचिस्तान साइड पे, एंड देयर वर मेनी डिफरेंट वेरी unusual weird kind of plants, so मुझे देखने से लग रहा था कि ये बहुत wild plants हैं, maybe they might be poisonous also, and I used my Google lens, smartphone तो था हाथ में, and used my Google lens to find out, मुझे नाम नहीं पता था, और the Google lens immediately told me the species identification, पूरा बताया कि कौन सा genus है, कौन सी species है, and then I found out that I should not touch that flower because it was poisonous, because desert में ज़्यादातर poisonous होते हैं, wild plants and flowers, so it was poisonous, right? So if a person is going and has been given to assess the species diversity of an area, he can use a Google lens, he can take a camera with him, अगर उसके पास Google lens नहीं तो कैमरा ले ले और तस्वीरें खींच लें, घर आके फिर बाद में let's say कि उसके पास स्मार्टफोन ही नहीं है, तो he can always take pictures, save the pictures in his gallery, and then he can find out about the identification of that particular species from like an encyclopedia या जहाँ कहीं से भी, right? And then he can also devise various ways of identifying those animals. वो अपनी की खुद बना सकता है. For example, राफे आप मुझे बताओ, what is the broadest kind of categorization या classification of all life on earth? अगर मैं कहूँ पूरी life on earth को आप 2 categories में divide करो, आप किस में divide करोगे? vertebrates, invertebrates. वर्टिब्रेट इनवर्टिब्रेट भी आप बहुत नीचे वाले कैटेगरी में आ गए हो, और इसके ऊपर भी एक कैटेगरी है, सोचो। सिंगल सेल मल्टी सेल। हाँ, सिंगल सेल मल्टी सेल, या हम कह सकते हैं प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स, isn't it? और भी ऊपर चले जाओ, प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स, फिर प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स के बाद you can come up to vertebrates invertebrates, या vertebrates invertebrates से भी पहले आप कर सकते हो कि animals, plants, fungi and protoktist and इस तरह से, ठीक है? So there are various ways and you can make your own key. आप अपने हिसाब से की बनाओ कि भाई crawling insects या flying insects या 6-legged insects या 8-legged insect. You can keep on making your keys, and like for example एक simplest key होगी जिसका नाम है dichotomous. Dichotomous मतलब कि I make a heading and I then make a dichotomy. अब ये dichotomy हो गई, dividing it into 2 categories. I can make a trichotomy. I can keep on categorizing it into various levels depending upon मेरे दिमाग में क्या आ रहा है, right? As I told you, if I come across too many animals, अब सबके नाम मुझे याद नहीं रहेंगे, और हो सकता है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं हो कि मैं सबके नाम लिखूं, so I will just take pictures and then when I come home I can do all that. Pooters to collect small animals means ke I'll show you a picture of this man who's collecting small animals by means of a pooter, which is actually you can see ke ye small insects hain जो वो इस तरह से कैप्चर नहीं कर सकते, तो he'll be using this very simple device to collect those small insects. He can collect them, he can study them. Of course, वो अपनी टीम के साथ कहीं जाएगा और वो स्टडी करेगा, and then he can have an idea, क्योंकि हर चीज तो वो on the ground नहीं कर सकता. Okay, still these were just the basic outlines. He has been given this task to assess the species diversity, and he's doing all sorts of things to collect and make a list of different kinds of animals. ठीक है? Now, when he has been given this task of finding out the species diversity, ठीक है? मैं अब ये लिख रही हूँ, वो species diversity मालूम करना चाह रहा है, तो he has 2 aspects of finding out the species diversity. One is abundance and one is distribution. अब आप लोग ये abundance की भी और distribution की भी definition पढ़ो और मुझे बताओ कि क्या फर्क है इसमें. What is the difference between abundance and distribution?
Okay, this blue box that I have made, imagine it as a piece of land in an area, and these red dots are the caterpillars found in that area. So अब आप मुझे बताओ इस blue box को देख के कि इसमें abundance क्या है और distribution क्या है. Come on, quick guys. Miss, distribution is the blue box itself because वहाँ situated है. अच्छा ठीक है, और abundance? Abundance, the amount of caterpillars inside. अच्छा, abundance of the species determines how many members of that species live throughout the ecosystem. अच्छा ठीक है, and now we will be actually calculating the abundance and distribution. हम अब करेंगे इसके बाद. अच्छा, this is a very एक general सा question है कि some students they surveyed the species diversity of an area of woodland and some grassland nearby, and they used a 20-minute time search. यानी कि they were supposed to find out the species diversity. एक करीब area था grassland का भी और woodland भी, and they were given this 20-minute time कि वो search करें और find out करें कौन कौन सी species वहाँ पे. Explain why they use the same technique for two areas. राफे आप बताओ. Same technique क्यों use की? There were a group of students. Yes, conditions बोलो. will be same, I guess. नहीं, condition same नहीं है ना. देखो एक Miss, because woodland they're है. both rural areas, एक हद तक. हाँ, एक ये भी है reason कि देखो उन students को दो task मिले थे to go and find out the species diversity in the woodland and grassland. अब उन दोनों को उसके लिए 20 minute का time मिला था, तो they will use the same technique for both the areas because they want their study. अब याद करो कि अब हम research कर रहे हैं. They want their study to be as unbiased as possible. ठीक है. So उस unbiased के element को निकालने के लिए उन्होंने जो technique use की वो same to same technique use की. Right, and then they part B is telling you that they found 56 species in the woodland and 12 in the grassland. What other data could they have collected to compare the biodiversity of the two ecosystems? दो ecosystems हैं, एक woodland है और grassland है. ठीक है. उन्होंने देखा कि एक जगह में woodland में they found out 56 species and in grassland they found 12 species. तो फिर और क्या डेटा वो कलेक्ट कर सकते थे इसके अलावा? जी बताएं. Genetic diversity. हाँ, genetic diversity कर सकते थे, and they could have found out the species diversity भी कर सकते थे, the numbers, abundance of each species and the range of different types within each species. देखो उन्होंने सिर्फ ये बताया कि कितना था. हाँ, they said 56 species थी, नाम नहीं बताया, in the woodland and 12 species in the grassland. So they could have collected some more information also. For example, part B answer देखो, इसी तरह के questions exam में भी आते हैं कि they could have found out एक species के कितने number हैं. For example, 56 species जो उनको मिली ना, तो हो वो सब species अलग-अलग थी. तो हर species के कितने members थे, they could have counted that, and then they could have also found out the range of different types within each species, which means कि अगर एक snail की एक ही species है, तो as Mariam said, they could have found out the genetic diversity. ठीक है. तो 3 things, मोटी मोटी चीजें हम कह सकते हैं, 3 मोटी मोटी चीजें वो देख सकते थे, जिसमें से उन्होंने एक चीज देखी. They only found out the numbers of different species. ठीक है. But they could have found out the genetic diversity, as Mariam said, and they could have found out the abundance in numbers of animals belonging to each species. ठीक है. तो ये चीज वो कैलकुलेट कर सकते थे. एंड देन नाउ मूविंग ऑन टू, अब आहिस्ता आहिस्ता हम कैलकुलेशन वाले पार्ट पे आ रहे हैं. एंड दिस टॉपिक इज स्टडीड अंडर द ब्रॉड कैटेगरी ऑफ सैम्पलिंग. अब इमेजिन कि यू आर अ रिसर्चर और आपको एक फील्ड जॉब मिली है, आपकी फील्ड की जॉब है. ठीक है. जैसे लोग फील्ड पे जाते हैं अपनी टीम के साथ, एंड यू हैव बीन टोल्ड टू सैंपल एन एरिया. And this sample is an ecological sample. ठीक है. तो अगर आपके एग्जाम में आपसे पूछते हैं कि what's a sample or what's an ecological sample, so it's a piece of an area which you want to sample. यानी उसको आपको जाके study करना है from the point of view of finding out the biodiversity, the species diversity and the genetic diversity. आपको देखना है कि वो कितना biodiverse है.
वो कराची की तरह कम बायोडाइवर्स है या इज इट वेरी डज इट हैव अ वेरी हाई बायोडाइवर्सिटी जस्ट लाइक एन अमेज़न रेन फॉरेस्ट? अच्छा राफी, आप मुझे बताओ, कैन यू गिव मी एनी एग्जांपल ऑफ एन एरिया व्हिच इज बिसाइड्स द अमेज़न रेन फॉरेस्ट, जो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा, जिसके लिए हम कहते हैं कि ओ यू नो इस एरिया की बायोडाइवर्सिटी बड़ी खतरे में है बिकॉज यहाँ पे सारे वो हैं, लाइक द स्पीशीज आर एट अ डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन? किसी जगह का नाम बताओ राफी। मिस Antarctica. वैसे Antarctica? मिस No, not Antarctica. दैट्स रॉन्ग, दैट्स रॉन्ग। That's wrong. मिस वैसे टू चीजें हैं which जो मैं आई कीप अप विद न्यूज़ के एनिमल्स के ऊपर बहुत होता है। मिस सवाना एंड आउटबैक, ऑस्ट्रेलिया का आउटबैक एंड बिल- अफ्रीकन सवाना, but both of them are burning बिल्कुल up सही, basically। बिल्कुल, वेरी गुड। सवाना इन ऑस्ट्रेलिया, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया में इतनी वाइल्ड फायर्स हो गई थी लास्ट ईयर की बात है कि ये बातें चल रही थी न्यूज में, मीडिया में, कि यू नो मिलियंस ऑफ स्पीशीज, जो कि अभी हमें नहीं पता चल रहा, अगले साल पता चलेगा या उसके बाद इसके इफेक्ट्स पता चलेंगे कि बिकॉज ऑफ दीज फायर्स सो मेनी स्पीशीज हैव बीन कंप्लीटली लॉस्ट, जल के मर गए, राइट? एंड देन of course then this means that these are areas of threatened biodiversity or areas with threatened biodiversity, right? कि जिसमें खतरा है। मेडागास्कर के बारे में सबने सुना होगा, मेडागास्कर? यस यस मिस। हाँ, Yes. कार्टून सबने देखा होगा। कौन सा वो बड़ा मशहूर सा कार्टून है? मिस वो मेडागास्कर ही है कार्टून। Penguins of मेडागास्कर ही, Madagascar. हाँ हाँ। अच्छा, रियो तो सबने देखा होगा, रियो। जी, उसके हाँ, अंदर रियो तो ब्लू सबको, हाँ मिस हाँ वो जो बिल्कुल रियो सही, के अंदर जो ब्लू ब्लू मकॉज होते हैं मकॉज उसके होते हैं अंदर। वो एक्सटिंक्ट हैं, हाँ दे गॉट एक्सटिंक्ट। एग्जैक्टली। सो अमेज़न हो या फिर करीबियन हो, या यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट द कोरल रीफ, द ग्रेट बैरियर कोरल रीफ, एक ऑस्ट्रेलिया में भी यस है, यस पता मिस, नहीं अब। हाँ, इट्स Yes. सो डाइंग। हाँ, और हमारे कराची में कौन से हैं? मैंग्रोव्स, है ना? मैंग्रोव्स कहते हैं ना कि हम मैंग्रोव्स जो है वो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा चांस होता है ऑफ फ्लडिंग इन एन एरिया। मैंग्रोव्स प्रोटेक्ट द कोस्टल लाइंस, डू यू नो दैट? Yes, miss, but now they're all damaged. Exactly, they all damaged. So this means that we can say that all those places of Karachi coastline in which there's you know a lack of mangroves, those are also areas of threatened biodiversity. So अब जब threat आता है ना, तो then it's the job of the biologist and slash ecologist to find out the extent of the threat. आप ऐसे ही नहीं कह सकते हाँ threatened है, आपको facts and figures के साथ बात करनी होती है, right? So a scientist always talks from with facts and figures. So he has to give evidence to it. So for that evidence, he needs to sample an area. अब प्रॉब्लम ये है कि हम सैंपल क्यों कलेक्ट करते हैं? बिकॉज अगर आपसे कोई कहे कि सारी कराची के कोस्टल लाइन के मैंग्रोव्स के बारे में आप जो है ना उस पूरी कोस्टल लाइन को आप सैंपल करो, तो विल यू बी प्रैक्टिकली बी एबल टू डू इट? यस राफे? नो मिस, इट्स नॉट पॉसिबल। नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। That's why we always ये हम करते हैं, ये आपसे पूछेंगे एग्जाम में, why do we sample a small area? So you will say, ये बड़ा एक लॉजिकल सा आंसर है, तो why do you want to sample a small area? We want to sample a small area because it's impossible to It's measure more a whole. convenient. हाँ, it's more convenient, but सिर्फ convenience नहीं देखनी, हमें convenience के साथ साथ remember one thing, we want to make our research as unbiased as possible. यानी हम एक hypothesis बनाते हैं, we do an assumption, and that assumption is कि the sample, the small piece of the area that I'm sampling, that small sample is a representative of the whole big area. यानी कि मैंने पहले से assumption बना ली है कि अच्छा मुझे सिंध की किसी जमीनों को जाके सैंपल करना है, क्रॉप फील्ड, राइस फील्ड है या जो भी है, शुगर केन फील्ड है, तो आई जस्ट मैं जो है एक स्मॉल एरिया सैंपल कर लूंगी एंड देन आई विल अज्यूम कि बाकी का एरिया विल आल्सो बी अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दैट स्मॉल एरिया। But then miss, the results हाँ, cannot always be generalizable. बिल्कुल सही बात, कि ये तो बहुत जबरदस्त बात की है कि रिजल्ट्स कैन नॉट बी जनरलाइजेबल। तो अगर फॉर एग्जांपल अब मैं इसको ये बना रही हूँ, दिस इज द एंटायर फील्ड यू वांट टू सैंपल, ठीक है? तो आप कहोगे कि अच्छा ये पूरा एरिया है, अब I can't practically sample the entire area, तो अब मैं इसको randomly sample कर लेती हूँ, ठीक है? randomly करूँ या non randomly करूँ, कैसे करूँ? फॉर एग्जांपल आप मुझे बताओ, छोटे छोटे एरियाज करने, तो क्या दिमाग में आ रहा है? how should be I'm measuring or sampling this area to make my result as unbiased as possible? क्या करूँ? We take random.
random portions. रैंडम पोर्शंस, ठीक है। उसके लिए मोबाइल ऐप में एक ऐप होती है, उसका नाम होता है रैंडम नंबर जनरेटर। कभी किसी ने यूज किया ये ऐप रैंडम नंबर जनरेटर? Yes, No. yes, miss. नहीं यूज की? अच्छा, आई Is that शो यू what- कि कैसे। हाँ, एक सेकेंड, अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कैसे आप जनरेट करते हैं। आई जस्ट शो यू दिस। हाँ, रैंडम सैम्पलिंग इसको कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज एन ऐप दैट विल जनरेट रैंडम नंबर्स। ठीक है, उसने जनरेट कर लिए रैंडम नंबर्स, और व्हाट आर यू गोइंग टू डू विद दीज नंबर्स? फॉर एग्जाम्पल, दैट यू हैव प्लान्ड ऑफ सैम्पलिंग एन एरिया, इतना बड़ा एरिया, राइट? और आप ये फैसला करना चाहते हो कि विच एरिया यू नीड टू सैम्पल, सो इट्स गोइंग टू जनरेट द नंबर्स, and those numbers can be used as coordinates, so that at those coordinates, जो coordinates आप बनाते हैं ग्राफ पे, will be those places where you will sample. और आप ऐसे ही नहीं sample करेंगे, for that you will take a square shaped structure. एक square shaped structure होता है जिसका नाम आपको आना चाहिए in exams. The name of that structure is a quadrat. Quadrat इसलिए कहते हैं कि it has 4 sides. ठीक है, square होता है ये. It can be made up of a metal, or it can be made up of wood. It can be plain, or it can be gridded like this. ऐसे हो सकता है gridded, right? Why are we using these quadrats? Because what will we do? We will be throwing these quadrats. हम फेंकेंगे इन quadrats को into that huge area जो हमें sample करना है. For example, कि अगर हमें we have to sample this big area, तो वो जो मैंने random number generator use किया था ना उस mobile application में, तो उससे मुझे numbers मिलेंगे. उन numbers को मैं use करूंगी as coordinates, and then at those coordinates I'll be throwing my quadrats. Let's say कि मैं ये decide कर रही हूँ कि मुझे 10 quadrats use करने, so I'm using 10. 1 2 3 4 5 जो भी है, सॉरी ये शेप्स डिफरेंट आ रहे हैं, लेकिन इस तरह से आई एम यूजिंग द क्वाड्रेट्स. आई विल जस्ट शो यू द नंबर्स और फिर आपको पता चलेगा. जैसे कि ये रहा आपका रैंडम नंबर जनरेटर. जस्ट अ मिनट, मैं इसको हटा दूं ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो. दिस इज योर, ये आपका रैंडम नंबर जनरेटर है. ठीक है, आपने क्या किया इस रैंडम नंबर जनरेटर के लिए, इससे कि you will take pairs of random numbers, right? And those random numbers, pairs of random numbers, are used to provide coordinates for locating quadrats. The pairs of the random numbers that you generate through the mobile application, उससे आप अपने लिए coordinates निकालोगे, और उन coordinates पे आप अपने quadrats को locate करोगे. और उन quadrats से आपको करना क्या है, उसको रख के उस field के ऊपर you have to count the different kinds of species that you see, not only the different kinds, और एक ही species के कितने नंबर हैं उस छोटे quadrat के अंदर, वो आप काउंट करोगे. Roughly कितने आप quadrat यूज करोगे, that's completely your own decision, depends upon the size, the original size of the huge area that you are taking into account. बहुत बड़ा एरिया तो आप सोच लोगे चलो I can use 20 quadrats or 30 quadrats, और हर quadrat में जाके आप individual number of the species भी देख रहे हो, और मतलब kinds of species, और एक species के कितने numbers हैं वो भी आप note down कर रहे हो, and you are trying to collect this data. Let me show you this. For example, कि in random number generator से आपने pairs of numbers निकाले, और उन pairs of numbers से आपने coordinates निकाले, and coordinates will show you, will give you about an idea about where you are going to locate your quadrats. अच्छा, उस random number generator ने मुझे दो numbers दिए 9 and 6. तो 9 मैं यूज कर लेती हूँ अपने x axis के लिए, 9 number, and y I'm using for sorry number 6 I'm using for my y axis. ठीक है, लेट्स सपोज कि ये आपकी वो पूरी फील्ड थी जिसको आपको सैंपल करना था. आप पूरी फील्ड को सैंपल नहीं कर सकते, सो यू हैव डिसाइडेड कि आप ये छोटे छोटे से स्क्वायर शेप क्वाड्रेट इधर उधर फेंकेंगे. तो यू डोंट वांट टू जस्ट थ्रो देम हियर एंड देयर, यू वांट टू थ्रो देम at places so that your measurement is as unbiased as possible. So where do you throw them? You generate pairs of numbers through mobile app. Use those pairs of numbers as your coordinates. जैसे कि 9 for the x-axis and 6 for the y-axis. So
This means आपने यहाँ पे एक quadrat रख लिया, and so on, and you keep on generating pairs of numbers that gives you places where you will be locating your quadrats. ये बात सबके समझ आ रही है या नहीं आ रही है? Yes, miss. अब एक तस्वीर देखो. This was a grassland. अब imagine करो grassland में पता नहीं क्या क्या grow हो रहा होता है. Earthworms and small leaves, grasses, flowers, daisies, big leaves, butterflies, बहुत सारी चीजें. ठीक है? This a team goes, and what does a team do? It takes a long tape measure. एक tape measure वो ले लेता है, बड़े बड़े से tapes नहीं होते जो आप नाप करते हैं, and he stretches that tape measure onto that piece of land. Then he generates pairs of random numbers through the mobile app, uses them as coordinates, जैसे इन्होंने आप use किया, और जिस उस point पे वो एक quadrat डाल देते हैं, and they start counting the numbers of the species and the varieties of the species. Let's do a question on this. ठीक है? एक हम question करेंगे, और उस question से पहले you will use this data, मतलब ये this formula, so that you can easily do the calculation in that question. आप इसका एक screenshot ले लो, इस पेज का एक screenshot ले लो, ताकि मैं आपको आगे का बताऊं questions, because I'll be moving on to the new page. अब इसका screenshot ले लो. Have you taken the screenshot? Yes. हाँ, राफिया आपने भी ले लिया है, मरियम, अशरफ? जी मिस. अच्छा, Yes, yes, miss. मैं इसको रीड कर लेती हूँ, और then we'll start doing the question. और question easy है बहुत. You can use your results in two different ways. कौन से results की बात कर रहे हैं? ये quadrat में जो हम calculation कर रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं. You can calculate species frequency and species density. Frequency से पता चल रहा है कि हम number calculate कर रहे हैं, density से पता चल रहा है कि हम उसकी spread देख रहे हैं. We are looking at the spread, right? Species frequency is a measure of the chance of a particular species being found within any one quadrat. ठीक? You simply record whether the species was present in the quadrat that you analyze. For example, एक एरिया आपको दिया गया है और आपने उस एरिया में 50 दफा क्वाड्रेट इधर उधर फेंके, right? You've used 50 quadrats and you found out daisy plants in only 22 of those quadrats. So a huge crop field, right? You have used your quadrats or thrown your quadrats at 50 different places, and out of those 50 places, you only found daisies in 22 quadrats, right? So the formula for species frequency will be 22 upon 50 into 100, which is equal to 44%. This is species frequency. Second thing is species density is a measure of how many individuals there are per unit area or per square meter. So for species density, you will count the number of the individuals divided by the total area of all your quadrats. ठीक है? अच्छा, अब इसको दिमाग में रखते हुए we will be doing this question. पहले ये कर लेते हैं question, and then I'll give you some other varieties of questions. You have the question in front of you. ठीक है? इसको आप खुद से करो, और I'm just waiting for 2 to 3 minutes. मुझे फटाफट इसका आंसर बताओ. A survey gave the following results for a species of red sea animal. It's a sea animal on a rocky shore in New Zealand using a quadrat with an area of 0.25 square meter. The number of quadrats used over here are 10, and in each quadrat, whether or not the sea animals were found, वो भी बताया हुआ है उन्होंने, और जब वो found हुए थे तो एक क्वाड्रेट में कितने नंबर थे वो भी बताया हुआ है, राइट? सो यू हैव टू कैलकुलेट स्पीशी फ्रीक्वेंसी एंड स्पीशी डेंसिटी फ्रॉम द रिजल्ट्स ऑफ दिस सर्वे. अब जल्दी से मुझे ये कैलकुलेट करके बताओ.
Rafi, what is the total number of the quadrats? 10. 10. In how many quadrats were the red animals found? 5. 5. 1, 2, 3, 4, 5. अच्छा, क्या होगा स्पीशी फ्रीक्वेंसी? 50. 50%. 50% हो गई. ये तो आपकी स्पीशी फ्रीक्वेंसी हो गई. अब स्पीशी डेंसिटी बताओ. स्पीशी डेंसिटी का क्या, इस इन्होंने फॉर्मूला नहीं दिया होता, इन्होंने आइडिया बताया हुआ था कि for species density it's a measure of how many individuals there are per unit area. ठीक है, अब per unit area आप निकालो इन सब quadrats का. What is the covered area of one quadrat? इस question में हाँ जी, एक क्वाड्रेट का कितना है एरिया? 0.25 meter square. 0.25. How many quadrats are there? 10. 10. So tell me the total area. 0.25 into 10. 2.5 meters square. कितना? 5? 2.5. 2.5. Okay, 2.5 हो गया. And count, add these numbers. 3 plus 1 plus 5 plus 2 plus 1. कितना हो गया? 12. 12. Okay, so then यही आंसर आ रहा है. Yes, miss. ठीक है, 10 quadrats were placed. So the total area is 10 into 0.25 square meter, which equals 2.5 square meter. So the total number of sea animals found in this area was 12. So the species density will be 12 divided by 2.5, which is 4.8 per meter square. So the species frequency which we calculated was 50%, and the species density is 4.8 per square meter. This was species frequency, and this was species density. Acha. Have all of you understood how to calculate species density and species frequency? Yes. Okay. Suggest when it might be more appropriate to use species frequency rather than species density to record the abundance of the species. They are asking you, what are those conditions jisme species frequency is better than species density? So this, when it is not actually practically possible to count individual organisms. For example, you may find some organisms in a grassland which are covering the surface of the rocks. मतलब एक ग्रास है या कोई एल्जी है या कोई फंगस है जिसने रॉक को पूरा कवर किया हुआ. अब आप उसमें से कैसे कैलकुलेट करोगे स्पीशी डेंसिटी? इट्स डिफिकल्ट कि आप एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म को बैठ के काउंट करो. ठीक है, सो इन दैट केस स्पीशी फ्रीक्वेंसी वुड बी अ मच इजियर थिंग टू डू as compared to species density. And then you have colonial animals which grow in colonies like coral. अभी हम coral reefs की बात कर रहे थे, उसमें भी ये इतने ज्यादा होते हैं कि you can't count them individually. Again, for that, species frequency is a much better option as compared to species density. And then of course grass plants bhi itne zyada hote hain ki they are interconnected with each other. It's impossible to count individual grasses. So, and we all know that zyadatar jo aapki grasses hain, they reproduce asexually, to wo bahut bade area ko cover karti hain. In that case, we cannot calculate the species density. We can only calculate the species frequency. Okay, so this is one of the kind of questions that can be asked in past papers as well. अब ये दूसरा क्वेश्चन आप लोग सब करो और कोई और मुझे जवाब दे मरियम अशरफ और राफी के अलावा. The question is in front of you. इसका भी आप फटाफट निकालो स्पीशी फ्रीक्वेंसी एंड स्पीशी डेंसिटी और मुझे आंसर बताओ. आई एम वेटिंग.
Miss species frequency, एक second. Miss of day flowers on lawn is 60% और field में 30% है. एक सेकेंड. Calculate species frequency and species density in each of the two areas. तो day flowers का आपने क्या एक one at a time कर लेते हैं. Day flowers का species frequency कितना है? 60%. 60%. अच्छा, और species density वो अभी नहीं निकाला? अभी नहीं निकाला मैंने, दोनों का पहले वो निकाल लिया. अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है. तो इसका 60% और उसका फील्ड वाले का 30. 30. चलो ये आंसर्स नोट कर लेते हैं. अभी आई हैवंट सीन द मार्क स्कीम, तो अभी मैं खुद देख लूंगी. एंड देन स्पीशी डेंसिटी बताओ. मैं सभी कर रही हूँ. हाँ, करके बताओ. Sixty and 30% is correct. मिस एक सेकेंड, उसका क्या कहते हैं, लॉन का स्पीसी डेंसिटी होगा 1.7. अच्छा, और दूसरे वाले का बिल्कुल सही है, 1.7. 8. हाँ, 60% इज करेक्ट, 30% इज करेक्ट, 1.7. अब आप सिर्फ 1.7 नहीं बोलोगे, बिकॉज इट्स पर स्क्वायर मीटर, सो यू विल से 1.7 पर स्क्वायर मीटर. एंड देन द स्पीशी डेंसिटी फॉर द फील्ड डे फ्लावर्स इज 0.8 per square meter. Good, Vanya. And then there was another question. ये कौन आंसर करेगा? राफिया, आप बताओ. Explain why is it important to use randomly placed quadrat. अब तो आपको पता होना चाहिए. Why should we use randomly placed quadrat? Just to make research as unbiased as possible. Very good. To make the research as unbiased as possible. Because already, remember one thing, we are not sampling the entire area. We are sampling a small area, making the assumption that the small area is representative of the whole, and we might not be 100% accurate. But at the same time, we want to make our results as unbiased as possible. So we are using randomly placed quadrats, right? Acha, and then when we talk about sampling, let me just make this thing very, very clear to you that under the topic of sampling, right, we say that we can do sampling in two ways. We can do it in a random way, and we can do it in a systematic way. Let me just make another slide so as to explain you clearly. What are we doing? We are sampling areas so that we can find out the species density and the species frequency. So we can sample areas randomly and we can sample areas non-randomly. Acha. Right now, the example that we did was using quadrats to randomly sample an area. अभी हमने ये किया. अच्छा, जब हम random sampling करते हैं, so we usually do such kind of sampling for areas which are fairly uniform. Please इस चीज को आप लोग याद रखो. Areas which are fairly uniform, more or less uniform. Example,
a grassland, or example a crop field, यानी जो हमें generally नजर आ रहा है कि हाँ ये uniform ही area है, उसमें हम random sampling कर सकते हैं. Please remember this. But if the area is non-uniform, अगर area खुद non-uniform है, like areas which are non-uniform, example of non-uniform area is a rocky seashore. Rafi, आप मुझे बताओ, why is the rocky seashore a non-uniform area? It's because it has like a area of rocks where animals will live. Then there's going to be this beach where sand and all of that. Then the sea, the water, the three different types of things. Exactly. कहीं पे पत्थर है, कहीं पे वो है मिट्टी है समंदर की, and then there's water. तो लैंड में और तरह के एनिमल्स होंगे, वाटर में. So it's a completely non-random area. अगर आपको कोई कहता है कि जाके सी व्यू पे सैम्पलिंग करो, you can never do random sampling. For that you have to have another kind of sampling, and the name of this sampling is systematic sampling. Systematic sampling, right? So under the main topic of sampling, it can be random or it can be systematic. If we are using the random method, then this means we are actually sampling a fairly uniform area. And if we are using a non-random method or a systematic method, this means we are doing it to sample a non-uniform area. अच्छा, ये मैं क्यों इस पे इतना stress दे रही हूँ? Because in exams, you will be just given an example, guys, and you have to read in between the lines and figure it out yourself. The example that has been given to you is that of a uniform area or a non-uniform area. कभी कभी तो examiner आपको बता देगा, right? वो खुद ही question में कहेगा कि do random sampling, but sometimes the examiner might not tell you and you have to figure it out yourself. अच्छा, अब अगर आप figure out सही नहीं करते, so this means that you will be doing the entire question wrong, because अगर आपने ये ही नहीं find out किया कि whether it is a uniform area or a non-uniform area, so you'll be writing completely different details. ठीक है? Random sampling कैसे करते हैं वो हमने आज किया. How do we do systematic sampling? We'll do it some other day. But one thing is for sure, that systematic sampling is done for areas which are non-uniform. In random sampling, we used quadrats. In systematic sampling, we use something else. वो अभी मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी, मैं सिर्फ नाम बता रही हूँ. We use transects. जैसे quadrat भी एक kind of चीज थी जिससे हम count कर रहे थे, उसको field पे फेंक रहे थे. Similarly, in non-random sampling or systematic sampling, we'll be using transects. ठीक है? And another thing, what about, imagine करो कि birds जो उड़ रही हैं, right? And birds which are all the aerial animals, right? Or the huge tall pine trees जो हमें मरी में नजर आती हैं, उसको कैसे सैंपल करेंगे? कोई आइडिया है? यस, राफे आप ही बताओ. बर्ड्स को आपको सैंपल करना है एक एरिया में, कैसे करेंगे? बर्ड्स को आप पकड़ नहीं सकते. इस बस अप्रोक्सीमेटली देख लें एरिया में कितना है, थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन के साथ आई गेस. ठीक है, तो कोई वैसे कैसे तो रोक तो ऑब्जर्व? नहीं सकते कि एक जगह पर वो रहते हैं, हम लोग काउंट करें. तो अप्रोक्सीमेटली हम लोग को बस आइडिया ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि क्या हो रहा है, कितने बर्ड्स आते हैं इस टाइम पे. Can we use drones to capture to have have a overview? Yes, we can. Drones जरूरी है. बिल्कुल हम Like ड्रोन, you can just see them, ना. हाँ, we can see them. मतलब एरियल ऑब्जर्वेशन करनी है ना. एरियल ऑब्जर्वेशन के लिए तो ड्रोन्स ही है ना. जैसे फॉर एग्जांपल आप कहते कैसे इतने ऊपर पहुंचोगे पहाड़ों में, right? So for example, if you want to do aerial observation for large trees and animals जो बहुत दूर दूर हैं, you can't have access to them, तो उसके लिए you can use drones. And this part about how to use drones and all is not a part of your syllabus, but this is just a general discussion. Yes, there are some animals which are creeping crawling animals, और वो एक जगह से या creep crawl करते हैं या फिर बहुत fast एक जगह से दूसरी जगह भागते हैं. They can't sit at one place. So in order to sample those animals, you use a method which is known as a Lincoln's index. Lincoln's index इसका formula है. What do you do in this? You capture the animals, you mark them with a marker, and you recapture them. And this applies to those animals which are small
and they don't sit at one place. They keep changing their place from one place to another in search of food or shelter or whatever. Miss, I have In seen order, that people have tried this on sharks and lynx. people, Yes, I've क्या seen करते हैं बताओ? they would try this on sharks. Like they would tag something on their fins, and I've also seen people try this on lynx, the ones inside the desert. सही सही सही. अच्छा, अब हम ये करते हैं, लिंकन्स इंडेक्स का एक एग्जांपल करेंगे. 5 minutes are left and then we'll be done. ये भी बहुत सिंपल है. ये मैं लिंकन्स इंडेक्स इसलिए करा रही हूँ so that हम सिंपल आज कर लें, and systematic sampling we'll do next week. वानी, आप इस क्वेश्चन को जरा पढ़ो loudly in another investigation. Miss Paru? हाँ हाँ, पढ़ो पढ़ो loudly. In another investigation in a different area, the population of this snail was investigated using a capture-recapture method. A sample of the snail population was collected and marked. These snails were then released, and at a later time, another sample was collected and a number of marked individuals counted. The population was estimated using the formula. Formula पढ़ना है? अब रहने दो बस. Thank you. So snails, they keep changing their place. We can't just count them in a certain area और फिर हम अंदाजा लगा लें कि यही उसकी population है. So animals which keep changing their place have to be collected, have to be marked, then released also, और फिर कुछ दिनों के बाद दोबारा से उनको capture किया जाता है और कुछ एक उसका number निकाला जाता है. But this number is all estimation by using a formula. So what do you say? The formula that you use, you have to learn this formula, which is number of the animals marked in the first sample, जो आपने mark किए first sample में, multiplied by total number of the animals in the second sample, divided by the number of marked animals in the second sample. ठीक है? आपने पहला एक sample collect किया, mark किया animals को, फिर उसको release कर दिया. Release करने के बाद 1 to 2 days के बाद you collect another sample and then you will note कि अब इसमें कितने marked हैं, right? And sort of एक estimation से एक ratio proportion से you will try to find out the estimated population of those. You try to estimate the population of those animals in the area by using this formula. Number of animals marked in the first sample multiplied by total number of animals in the second sample and number of marked animals in the second sample. ठीक है? अच्छा, you do 2 investigations. Investigation 1 में the second sample जो आपने collect किया mark करने के बाद वो 24 घंटे के बाद उसको collect किया था after releasing those snails. And in investigation 2, the second sample is collected 72 hours after the release. अच्छा, अब इसको इस formula को use करते हुए, can you guys tell me the missing number in this? इस फॉर्मूला की पिक्चर लेनी है तो ले लो और जल्दी से मुझे कैलकुलेट करके बताओ. Number of animals in the first sample multiplied by total number of animals in the second sample divided by number of marked animals in the second sample. पिक्चर ले ली इसकी? मैं स्वाइप कर दें दूसरी तरफ, टेबल की तरफ. कर दो. ठीक है, चलो अब आप मुझे बता दो इसका क्या आएगा. All calculation has been done except for one. मिस इन्वेस्टिगेशन 1 का करना है ना? हाँ, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन 2 का तो सब कुछ हुआ है. मिस 680 आई गेस. 680. अच्छा, नहीं देख लेते हैं क्या. वेट मिस गलत है. हाँ, सही है, बिल्कुल सही है. 680 ये रहा. अच्छा सही है. अच्छा सॉरी, बिल्कुल सही है. अच्छा, इन्वेस्टिगेशन 1 में ना वी कलेक्टेड दोनों में हमने स्नेल्स को मार्क किया. In one investigation, after marking, we released them and we recollected them after 24 hours. And investigation 2, we recollected them after 72 hours. वानी, आप मुझे बताओ, which investigation can be considered more reliable? या sorry, इसमें question तो ये कहा गया है कि suggest why the procedure used to estimate the population means that the estimate made from investigation 1 is more reliable than the estimate from investigation 2. बताओ क्या reason हो सकता है? मिस एक मैं सोचने ना.
बाकी लोग भी सोच लें प्लीज. राफे आप भी सोचो. जो स्नेल्स आपने कलेक्ट किए 24 आवर्स बाद और एक स्नेल्स आपने कलेक्ट किए हैं 72 आवर्स. So the examiner says that the investigation in which you collected the snails after 24 hours is more reliable. Why? Miss, because it's more recent. It's more recent, and the chances are that if you are going to recollect the second sample after 72 hours, maybe the snails, they have मिस कोई died, or चेंजेस हो सकते हैं उनमें. हाँ, हाँ क्वांटिटी में डिफरेंस हो सकता है, वो सब कुछ. हाँ हाँ, और किसी predator ने अटैक कर दिया होगा. right, आपने उसको मार्क कर दिया है, so the marking has made them more obvious to the predators, and they might have migrated to some other place or damaged or whatever. So that's why the investigation 1 results are more reliable. Okay, I'm ending this class, and next week inshallah at the same time on the same day on every Saturday I'll be taking this class. Slowly and gradually we will be inshallah be able to finish this syllabus. Okay, so Allah Hafiz everybody. Allah Hafiz, miss. Allah Hafiz. Allah Hafiz, miss. Allah Hafiz, miss. Allah Hafiz.